Hey everyone, we are back, and today was the match between India and England. India performed well. First of all, um, the captain of England won the toss and elected to field. He should have batted first, put in the target, put in the target on the board, and have India chase the target. But India, so when toss happened and India was put into bat, Rohit came in and he said that उसने भी उसका तो बैटिंग करने का प्लान था क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और ड्राई हो रहा है सारा जा रहा है तो उसका पहले से बैटिंग करने का प्लान था उसने अपना माइंड सेट किया हुआ था तो इंडिया परफॉर्म वेल इन ऑल in they covered everything in the ground. Batted well, fielded well, bowled well. Everything was good, perfect. And again, Rohit Sharma scored a 50. Wow! I mean, what a batsman he is. What a mindset he has. What a body language. मैं इंडियन प्लेयर्स की जितनी तारीफ करूँ कम है अब एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्लेयर्स I don't see anything like what Indian players उनके पास जो है वो हमारे प्लेयर्स के पास नहीं ऑल दो बैक इन 90 चले जाओ फ्रॉम 92 टू 2000 हमारे पास प्लेयर्स थे जो ग्राउंड में रूल करते थे वसीम अकरम वकार यूनुस शुएब अख्तर बैटिंग में इजाज़ अहमद बैटिंग में हमारा सईद अनवर शाहिद अफरीदी भी था तब लेकिन वो रूल करते पता लगता था कि एक टीम खेल रही है और वो जो बैटिंग वैसे करते थे आजकल के वही प्लेयर्स जो दूसरी टीम के प्लेयर्स है वो बैटिंग कर रहे हैं और हमारी टीम बैक पे जा रही है वेल ये इस पे बाद में बात करेंगे लेकिन गुड सेकंड सेमीफाइनल इंडिया वन आई टोल्ड यू अरूज whoever win this match will win the World Cup. We already talked about And India will clinch the World Cup and they will raise the trophy of the World Cup. So yeah, best of luck India. I don't think South Africa will win, although it's their first time in ICC cricket history के वो final में आए हैं और उनका पहली दफ़ा पहुँचे हैं. मैं चाहूँगा कि वो effort करें लेकिन India is like India will be 80% and South Africa will be 20%. What do you think? Thank you for watching our show, and welcome to another episode of Mr. Mr. Cricket. As you can see, my husband is very much more excited, and he just gets right into it. But yeah, I've already called it that this is India's game. Regardless of what everybody keeps saying कि भाई ICC ने प्लान किया था इंडिया को फेवरेट हुआ है बट ये सब ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है थोड़ा लॉजिस्टिकली थोड़ा इंडिया को फेवर थी बट देन अगेन दे आर मेकिंग अ लॉट मोर मनी एंड ब्रिंगिंग इन अ लॉट मोर दे हैव द मोर राइट्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे आर प्लेइंग वेल they are performing well it doesn't matter कि उनको फेवर दिया है नहीं दी फेवर उस टीम को दे जो आगे परफॉर्म ही नहीं कर सकती जो फेवर लेके आगे जा रही लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने they did a great job. It's Rohit Sharma's last World Cup and he is like he wanted to win this World Cup. 50 overs के World Cup में चलो इंडिया के साथ में सैप हो गया था फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया ने इनको बीट कर दिया लेकिन इस दफ़ा T20 के वर्ल्ड कप में इंडिया वांट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज इट्स रोहित शर्मा's last World Cup and he has set his mind to win this World Cup and raise a trophy and bring the trophy to their home. And it's been a while for their fans. They kind of deserve it too because it's been a while since they won a trophy. Yeah, it's been a while. I think after 2011, they didn't win any major. In all honesty, at this point, I think we will see how it goes with South Africa's match tomorrow because they both have a really great bowling team. If you look at Rabada and Nokia. I can never say. Nokia. It's not Nokia. So I can never say that name. And then Shamsi, spinners की pitches हैं West Indies में. Yeah, and Shamsi and then Maharaj.
Maharaj, So technically, spinner. India also has great bowling attack. Like Yeah, no this doubt. time around, I No think doubt, no since doubt. ODI World Cup, you can see that India had a very good bowling lineup. Like probably one of the best, world's Yeah, best at this time. बैटिंग एंड बॉलिंग फील्डिंग लेकिन एवरीथिंग इज परफेक्ट. बैटिंग में लेकिन मसला ये है बैटिंग कि उनका जो में सबसे बड़ा प्लेयर है कोहली, वो चल नहीं पा रहा, लेकिन आई दैट्स द बिलीव ओनली सो इशू. कि वो फाइनल में चल जाएगा. फाइनल में उसने चलना वो है, तो उसने रोहित ने भी बोला है. वो फाइनल में चलेगा और वो फाइनल में मैच जितवा के जाएगा. ये तो आपने कल वो ये भी कहा था बड़ा कि वो बड़ा सेमीफाइनल में चल नहीं जाएगा. नहीं, सेमीफाइनल में नहीं, मैंने कहा था कि वो चल नहीं चलेगा, लेकिन फाइनल में वो चलेगा और वो मैच जितवा के जाएगा इंडिया को. ही इज़ अ बिग प्लेयर, वो बड़े मैचेस के लिए बना हुआ है और ही विल do something in the finals. I hope you're right about that because this might be his last World Yeah, Cup too. it will be T20 his. World Cup. So Yes. let's see what happens because I think all his fans would love it that if he can perform well. I'm like a fan of cricket, so for me it's like I would love to see a good cricket. Today it just felt like that it was a one-sided game to begin with. मतलब टॉस जीतने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्टार्टिंग में 2 विकेटें गिरा दी थी इंडिया की, लेकिन फिर भी उनकी पार्टनरशिप लगी. उनकी पार्टनरशिप एक तो उनके सारी रेन आ उनके गई. सारे रेन आ गई, ऊपर से उनकी पूरी लाइनअप स्ट्रांग है. अगर ऊपर से आउट होता है तो निचले स्कोर करके जाते हैं, अगर कोई मिडल से आउट होता है तो टेल एंडर्स आके स्कोर करके जाते हैं. बहुत परफेक्टली टेल एंडर्स यानी कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारा बैलेंस्ड है उनका टीम. उनकी बैलेंस टीम है. यस. Yeah, The way that they've been performing so well, and even for the batting team, the fielding is there, but they're not as efficient as some of the other teams who were efficient during this World Cup as per the stats that they showed us on TV. But other than that, India has done well when it comes to bowling and batting. Let's see how tomorrow's match goes. Personally, I'm kind of split at this point. मैंने जिस तरह कल कहा था कि मैं चाहूँगी कि साउथ अफ्रीका विन करे, not because I have anything against India. They're like the dominating team, and logistically speaking, yeah, they're South probably gonna Africa win it. first time आई है, maybe they will. Or that's the only reason because I want somebody who hasn't won a World Cup to win. That's what my personal experience. Yeah, South Africa never won the World Cup. अगर even अफगानिस्तान अगर पहुंचती तो मैं उनको चाहती वो विन करते, या अगर ये साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल रही होगी तो I would still want South Africa to win. So personally I just want that कि उनका इतना heartbreak हुआ है, I want them to win too. On the 29th, it's anyone's game. On the day of the final, that's when we'll see how big of a choker both teams are, because as of right now, they are the only unbeaten teams. So it's a good match. 2 unbeaten teams going to be fighting for the trophy. And yeah, I think we're gonna get to see a really good match, like maybe to the 20 over match, because so far in this tournament you've seen most of the matches that finished before 20 overs. I think अगर पाकिस्तान होती तो डेफिनेटली वो देती. पाकिस्तान अगर यूनिटी में खेल रही होती इस वक्त तो वो डेफिनेटली इंडिया को टफ टाइम देती. Yeah. If they were in the final, that would be amazing. I'm looking forward, maybe hopefully in Champions Trophy they can do that. But Pakistan has a lot of work to do. Yeah, I don't think they're going to be ready until the next 2026 India T20 World Cup. well played and keep up the good work. I just have one message to all of our Pakistani fans and to those journalists, whether it be Indian or Pakistani or any other journalist, कि आप आईसीसी को जितना मर्जी ब्लेम कर सकते हो, बीसीसीआई को कह सकते हो उनके पास कितना मर्जी पैसा है, लेकिन जो अभी जो देखने को मिलता है वो देखने को ये लग रहा है कि इंडिया डोमिनेटिंग टीम है. आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. दे परफॉर्म वेल. जो हम लोगों ने भी इन पर्सन देखी है मैचेस, उससे आप कह सकते हो कि there was no cheating, no nothing. Those people who sit on TV and make all these claims कि उन्होंने cheating किया, ऐसा किया, वैसा किया, no, there is nothing like that. Please don't spread those type of आपका अपना एक तो आपका पर्सनल इमेज भी ख़राब होगा, दूसरा आप पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब कर रहे हो. तो प्लीज़ डोंट सिट on TV and all these news channels that talk about this. Like it's just messed up. Don't even do that. That's just a really bad look for yourself, and that's a really bad unwanted media
what do you call it? It's just unwanted attention that you're trying to bring to Pakistan. And then secondly, I think I was listening to two Pakistani journalists having a go at कि भाई अगर पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है तो why not give all the Indian fans, why they're holding matches only in Lahore for India Pakistan if India does come, तो इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में क्यों हो रहे हैं? So I feel like that's unfair. They should be allowed to do more than one city for the matches, so that way all the people in Pakistan get to enjoy the matches, especially those fans who are waiting for the Indian team to come visit Pakistan. And then secondly, the fans who will be coming from India, आप अपना ईगो छोड़ के ये सोचो कि भाई ठीक है, आप इंडिया ने अलाउ नहीं किया पाकिस्तानी फैंस को जाने के लिए या जर्नलिस्ट को लिए इतने ज़्यादा, बट आप ये सोचो कि उनको रिस्ट्रिक्शन ये करना कि सिर्फ एक सिटी में रिस्ट्रिक्शन करना जस्ट बिकॉज इंडिया ने हमारे साथ ऐसे किया था, दैट्स नॉट राइट. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स शुड बी. टिट फॉर टैट इज नॉट द डील दैट यू वांट टू डू. No, just give. They should open visas for all the fans, and they should come to Pakistan. अगर फैंस कोई और सिटीज़ विज़िट करना चाहते हैं या जर्नलिस्ट कोई और सिटीज़ विज़िट करना चाहते हैं, दे शुड अलाउ देम. या वो ये है कि अगर फैंस अपनी एप्लीकेशन में मेंशन कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट for them, because then Pakistan can keep record of who's going where. And it's not just security for Pakistani people, it's also security for the Indian people, because we want to make sure that they are getting the right hospitality when they are visiting Pakistan. And they shouldn't restrict it to one city. They should be allowed to go visit other cities in Pakistan. So even if they're not following Indian team, Pakistan will allow them, but again Indian government will let them stick to one place. Most likely, yeah. But at least I पाकिस्तान mean, तो पाकिस्तान good ने कहाँ faith मना show करना है करे, भाई? लेकिन नहीं अली से वो मना कर सकते हैं. So I think कि एटलीस्ट आप गुड फेथ शो करें तो और आप कहें कि हाँ फैंस को अलाउ है इन सिटीज़ में, अगर वो जिस सिटीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे इंडियन की टीम नहीं भी खेल रही हो, then they should allow them to go watch those matches or go visit the cities. But maybe the Indian fans can mention it where they're gonna go. It will make things a lot easier. Yeah, let's talk. We should talk about this later on in detail. But It's been a while. it should be in good faith. Thank you for watching our video. We are putting the videos daily now. Please like and subscribe, and also share with your friends and family. It will not cost you anything. It will benefit us, and we will be making more videos for you guys. Okay. Thank you so much for watching our video. Don't forget to share, like, subscribe in whichever order that you want to feel like it. And we can't wait to do our post analysis for the final, and hopefully we get to see a really good final. Thank you so much, and hope you guys enjoyed this video. And Have a good day. Have a good night. Good day wherever you are.